बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो वीडियो है वो है आइल्स लिस्निंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ये जो टेस्ट है ये कैम्ब्रिज आइल्स बुक 13 लिसनिंग टेस्ट 1 में से है और सेक्शन 2 है क्वेश्चंस 11 to 20 और यहाँ पर हमने हल करने हैं क्वेश्चंस 11 to 13। चूज द करेक्ट लेटर ए, बी और सी और जो टाइटल है लिस्टिंग का वो है ट्रैफिक चेंज इन Cranford. So this audio is related about the changes which are about to happen in traffic system in Cranford. So the question number 1: why are changes needed to traffic systems in Cranford? Cranford में traffic systems के अंदर तब्दीलियों की ज़रूरत क्यों है? So the key word is why are the changes needed in traffic system and the name of the area is Cranford. जो options है वो हैं 3। A option है the number of traffic accidents has risen. So the traffic accidents is the keyword, reason is the keyword, यानी जो traffic accidents की जो तादाद है उसमें इजाफा हो गया है। बी ऑप्शन है the amount of traffic on the roads has increased. सड़कों पर जो ट्रैफिक की तादाद है या ट्रैफिक के जो नंबर्स हैं उनमें इजाफा हो गया है। सी ऑप्शन है the types of vehicles on the roads have changed, कि सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है उनकी जो किस्में हैं या उनकी किस्मों में क्या आ गई है, तब्दीली आ गई है। So let's listen to the audio and we have to use the elimination method. It means that we have to locate the wrong options into the audio and the one which will be the remaining option that will become automatically the right answer. So let's listen to the audio and first of all we have to track the question number 11: why are changes needed to traffic systems in Cranford? So listen to the audio. Good evening, everyone. My name's Phil Sutton, and I'm chairman of the Highways Committee. We've called this meeting to inform members of the public about the new regulations for traffic and parking we're proposing for Cranford. I'll start by summarising these changes before we open the meeting to questions. So, why do we need to make these changes to traffic systems in Cranford? So in the audio we have listened to, we need to make these changes to traffic systems in Cranford. So this sentence into the audio refers to the question number 11. Listen to the audio further. Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. In the audio we have listened to, we are very aware that traffic is becoming an increasing problem. हमें बहुत अच्छी तरह खबर है कि ट्रैफिक एक बढ़ता हुआ मसला बन रहा है. So there is no option related to any problem. Listen to the audio further. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. In the audio we have listened to, it's been especially noticeable with increase in heavy traffic while they are building a new hospital. So this audio gives a hint to the option C, but they are not saying the types of vehicles change. So it means option C is the wrong one. They are saying it is noticeable कि ये notice किया गया है, an increase in heavy traffic के heavy traffic में इजाफा हो गया है while they are building a new hospital, क्योंकि वो इस जगह पर एक नया अस्पताल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक की जो टाइप्स हैं उनमें तब्दीली आ गई है। सो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन. लिसन टू द ऑडियो फर्दर टू फाइंड द राइट आंसर. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. So in the audio we have listened to, but it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. इसका मतलब है कि तमाम अक़साम की ट्रैफिक की तादाद में इजाफा हुआ है जो कि हमारे लिए क्या है, बड़ी परेशानी है. It means
The right answer is the option B, because the option B refers to the rise in all types of traffic. The amount of traffic on the roads has increased. So B is the right option. B is the right answer. Let's listen what does the speaker says about the A option. Listen to the audio. To date, there's not been any increase in traffic accidents, but that's not something we want to see happen, obviously. So in the audio we have listened to, there is not been any increase in traffic accidents, कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि जो हमारा ए ऑप्शन है वो है द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैज रीजन, कि ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो तादाद है उसमें इजाफा हो गया है, जबकि ऑडियो में हमने सुना है देयर इज नॉट बीन एनी इंक्रीज इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. सो ए भी जो है वो क्या है, एक रॉन्ग ऑप्शन है, इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं. सो इट मीन्स हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो बी ऑप्शन है, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स हैज इंक्रीज्ड. क्वेश्चन नंबर 12. In a survey, local residents particularly complained about. Complain means उन्होंने शिकायत किया. It means they are very concerned. वो बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी में ही बंदा क्या करता है, शिकायत करता है. In a survey, local residents particularly concerned about. एक सर्वे जो किया गया है, उस सर्वे में जो मकामी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पर शिकायत की है. They are very concerned. ए ऑप्शन, डेंजरस ड्राइविंग बाय पेरेंट्स, के वालिदैन जो है वो खतरनाक ड्राइविंग करते हैं. बी, पोल्यूशन फ्रॉम ट्रक्स एंड लॉरीज, ट्रक्स और लॉरी से आलूदगी खारिज होती है. सी, इनकन्वीनियंस फ्रॉम पार्क्ड कार्स, जो पार्क कार्स हैं या गाड़ियां जो खड़ी की जाती हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है. सो लेट्स लिसन टू द ऑडियो. We recently carried out a survey of local residents, and their responses were interesting. In the audio, we have listened to, we recently carried out a survey of local residents and their responses were interesting. So this sentence refers to the question. In a survey, local residents particularly complained about. So listen to the audio further. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. So in the audio, we have listened to, people were very concerned about the lack of visibility on some roads due to the cars parked along the sides of the roads. कि लोग जो है ना वो कुछ सड़कों पर विजिबिलिटी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये विजिबिलिटी की जो कमी है वो उन गाड़ियों की वजह से होती है जो कि सड़कों के किनारे पर खड़ी की जाती हैं. सो इट मीन्स दिस audio refers to the option C, which is the right answer, inconvenience from parked cars, because into the audio we have listened to people were very concerned. Concerned means they complained about the lack of visibility on some roads due to the cars parked along the sides of the road. So C is the right one. Let's listen what does the speaker say about A and B option. Listen to the audio. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this wasn't top of the list, and nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. So in the audio we have listened to, we expected complaints about congestion near the school when parents were dropping off their children or picking them up. It means they were expecting. It was their expectation. ये उनकी तवक्को थी, लेकिन हकीकत में नहीं हुआ. ये उनकी तवक्को थी कि वालिदैन जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप या पिक करने के लिए आएंगे तो हजूम की वजह से मसला होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा ना हुआ. So it means A is the wrong option. We can cross it. Let's listen to the audio further. What does the speaker says about B option? Nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. So in the audio we have listened to, nor were noise and fumes from trucks or lorries, कि trucks और lorries से किसी किस्म का शोर और धुआं भी खारिज नहीं हुआ. So noise and fumes means pollution.
caused by trucks and lorries. तो इस तरह ऑप्शन बी भी क्रॉस होगा क्योंकि ट्रक्स और लॉरी से शोर और धुआं पैदा ना हुआ। तो इस तरह हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। इस तरह ए और बी जो हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। Question number 13. According to the speaker, one problem with the new regulations will be कि स्पीकर के मुताबिक one problem एक मसला है with new regulations नए कवानीन के साथ कि स्पीकर के मुताबिक नए कवानीन के साथ एक मसला होगा। We have to locate the problem with the new regulations. ऑप्शन ए रेजिंग मनी टू पे फॉर देम कि अदायगी करने के लिए पैसे को इकट्ठा करना पड़ेगा, रकम को इकट्ठा करना पड़ेगा। बी ऑप्शन फाइंडिंग अ वे एक तरीका तलाश करना पड़ेगा टू मेक पीपल फॉलो देम कि लोग उस पर अमल करें। लोग मतलब कवानीन पर अमल करें। देम मीन्स रेगुलेशंस, देम रेफर्स टू द रेगुलेशंस। फॉलो मीन्स ओबे, अतात करें या अमल करें। सी ऑप्शन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द पुलिस, पुलिस की मदद हासिल करने में मसला होगा। So listen to the audio. We think these new traffic regulations would make a lot of difference, but we still have a long way to go. In the audio we have listened to, we think new traffic regulations will make a lot of difference, but we still have a long way to go. So this audio refers to the question number 13. According to speaker, one problem with the new regulations will be. Listen to the audio further. We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. So in the audio we have listened to, we managed to keep our proposals within budgets so they can be covered by council. यानी हमने अपने तमाम काम अपने बजट पे रखे हैं और काउंसिल वो रकम पूरी करेगी। So it means raising money is not a problem. We can cross the A option. A is the wrong one. Listen to the audio further. But of course, it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. So in the audio we have listened to, but of course it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. Obeys them means follow. तो इस तरह ऑडियो में हमने सुना है कि न्यू रेगुलेशंस को मुतारफ करवाने का फायदा नहीं होगा अगर हमें तरीका ही नहीं पता हो कि हर कोई इस पर अमल कैसे करेगा। यानी हमें अगर तरीका ही नहीं पता कि हर कोई उन पर अमल कैसे करेगा तो फिर न्यू रेगुलेशंस का कोई फायदा ही नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम है। सो इट मींस आवर राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। लिसन टू द ऑडियो. What does this speaker says about the C option? And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. And C is of course the wrong one because in the audio we have listened to, they are not facing problem to get the police force. उन्हें पुलिस फोर्स हासिल करने या पुलिस फोर्स तक रसाई हासिल करने में कोई मसला नहीं है। इट मीन्स पुलिस फोर्स की मदद हासिल करने में उनके साथ कोई भी मसला नहीं है। सो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। आवर राइट आंसर इज द बी ऑप्शन।